Hello guys and welcome back to Above the Average. I am your host Chaitanya Nawate and today I am joined by my two best friends Ashlesh and Dusham. And yes, my third best friend. we have a guest on today's podcast. Hi, I'm Sahil and I'm the third best friend. That's it. Okay, so Sahil, what are you doing like in your career wise? I was preparing for law entrance. I was doing BA side by side and preparing for law. Why did you choose law and that too with BA? You have to be a graduate to go for just law, the 3-year course. And if you want to go directly to the law after 12th, then it's a 5-year course with BBA, LLB or BA LLB basically. Okay. So you always wanted to be a lawyer or what? Well, you know, after 12th, I was like, मैं क्या करूँगा आगे मेरे को कुछ पता नहीं था. I was like, okay, so lawyers get paid nice amount of money, so I would go with law. Okay. That was the only, like that was the most stupidest decision ever. But yeah, I mean, So you were running behind money. yeah, of course, everyone does. I think हाँ वो इस पे सब लोग का हाँ. Mm-hmm. But like you chose law, like you wanted Yeah. to get into law, but then now you are confused again. So why Yeah, do you I think mean- you are confused again? So before you answer that, I also want to tell the audience that Sahil here, our friend here, our third best friend, he is very interested and he does online courses and reads book on psychology. So what changed in your perspective that you were like, अब नहीं करना law? मतलब it didn't to the mental perspective, to be honest. Quarantine में ऐसा सोचा, if money wasn't the object, would I still go with all that hassle of studying so much? And the answer was like, में से नहीं होने वाला ये चीज बहुत पढ़ने से. Like I read a book, Mastery by Robert Greene. You all should read that. उसमें basically था कि मतलब when we do something, it's not the job we like, but the pleasure we get by doing the job basically. So मैं drawing वगैरह करता था. So it was not the drawing that gave me, you know, that dopamine. It was the looking at the picture, strategizing how I would put it onto a paper. That's what gave me the enjoyment of actually doing the art, which is very different from what Rishabh does. He's a very creative guy, which is very different from what I used to do. So basically, you needed a break in this lockdown to think what you Well, want to become. Do you think अगर लॉकडाउन नहीं होता तो तू स्टिल कर लेता? मैं देख सीन क्या है ना, मैं पूरा साल एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा था, ठीक है. सो अगर लॉकडाउन कब लगा था? 15 March. अरे हाँ 15 मार्च. ओके हाँ 15 मार्च. तो तब उसके बाद मेरा जो MHCT टेस्ट था वो था 12th अप्रैल में. तो 18th या 19th को मेरे कॉलेज का सेकेंड सेम खत्म होने वाला था. तो उसके बाद मैं लॉ के लिए और ज्यादा पढ़ने वाला था बेसिकली. और MHCT है करके थोड़ा एक वो मार्किंग ईजियर हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेसिकली. तो उस पर मार्क्स अच्छे खासे आ जाते. लॉ के साथ मैं आगे बढ़ सकता था, बट यू नो तब हो सकता था, बट अभी नहीं होगा कि मैंने वो चीज़ पे पूरा यू नो बोलना नहीं चाहिए बट यू नो गिव अप ही कर दिया. बिकॉज अभी यू नो आई रियली डोंट वांट टू डू दैट. लाइक तो देखो भी वो प्रोसेस ही पसंद नहीं है. एज इन लाइक यू आर लुकिंग आगे जाके अच्छा होगा बट देखो प्रोसेस ही नहीं पसंद है. वैसा। एग्जैक्टली कि मतलब अच्छा ठीक है बस ग्रेजुएशन खत्म करके जॉब लेके बस ऐसे पैसे हाथ में आ जाए तो लाइफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रोसेस ही बकवास है वो मेरे लिए. तो यू नो तुझे करके ही मजा नहीं आ रहा तो तू तो क्यों? आगे करके ही क्या फायदा. तो पैसे का भी उतना फिर ये नहीं रखा. बुक में भी था, मास्टरी में था कि यू नो नॉट कीपिंग मनी फेम पावर एज एन ऑब्जेक्ट, वुड यू स्टिल डू द जॉब विच यू आर डूइंग. वो क्वेश्चन था. तो नो वो चीज होता है क्योंकि we sometimes choose a career path just with the end product in our vision. Like हम सिर्फ end product के बारे में देखते हैं. and the main thing is there is no end product. Exactly. There is just at the finish line we just place our desire, wanting money, fame, power. That's all there is. So when you dream of some let's say मुझे ये job करना है, let's say मुझे lawyer बनना है, I will not just dream about the courtroom and what I'm saying and मैं इसको जेल में डाला, मैं उसको बाहर निकाला, जो I will also dream of the money that I get and the status that I reach. Can I get back to one thing? Yeah. When you said in the introduction of your podcast that 7th grade mein you were trying to win in that race, was that the running that you enjoyed or the winning that you enjoyed?
क्योंकि तेरा ऐसा था कि गोल्ड नहीं मिला तो सिल्वर चलेगा, सिल्वर नहीं मिला तो ब्रॉन्ज चलेगा. सो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि तू गोल्ड के पीछे भाग रहा था. लेट्स से कि गोल्ड इज मनी, ठीक है. सो लेट्स तू गोल्ड के पीछे भागे ना, यू जस्ट वांटेड टू विन. सो एवरी करियर हैज देयर ओन विंस. आई कुड बी अ ग्रेट, not a great, but you know मैं therapy के उस पे जा सकता हूँ given my skill sets. तो it won't be the money which gives me a pleasure. My sense of accomplishment would be मेरे patient को मैंने in a way उसके anxiety या कोई disorder से relief दे दिया है. That would be it. And तेरे लिए भी same था. इसके लिए भी वही है ना, ऋषभ के लिए. It's not the drawing but the creation that gives him the sense of enjoyment. हाँ, मतलब personally I would like, I mean I like running. जैसा तेरा तुझे पेंटिंग करना पसंद है, स्केच करना पसंद है, but what you are doing it for is the end product. What you are doing is for the end image. What is the end product? I mean, we just proved that okay, it wasn't the trophies but the sense of winning that was the end product, and it is for everyone. But you know, over the years we have been told that money is the end product. That's why we don't care about the art that we are doing, the work that we are doing. You know, मतलब वही rat race. But like dreams are usually influenced by the surroundings when you are growing. I would say desires are influenced basically by what you find the surroundings. It's very simple. It's like what you find cool बचपन में. हाँ, एंड वही चीज बड़े होने के बाद इतना बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है. बचपन में मेरे को बस स्कूल लगा था तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया मैंने. आई मीन मेरे केस पैशन और तो सबका है. बट व्हाट वी ड्रीम अबाउट इज बीइंग सक्सेसफुल. Yeah. So what is your successful dream? idea of being successful. Before he answers the question, interrupting today's podcast for fun fact of the day. Today's fun fact is about dreams. Did you know that there is a 52% chance that the things you dream about will actually occur in reality? Like, अगर तुम्हारे सपने में तुम एलियन से मिल रहे हो, 52% chance है it could happen in reality. Elon Musk might have done that, and that's why he wants to go to Mars. Anyway, the average person has over 1,400 dreams a year. That is a lot. And that is surely more than the times we sleep, right? That's because most dreams last 5 to 20 minutes. And the smarter you are, the more you dream. Yeah, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं तो डरो मत, खुश हो जाओ. You are quite smart. Anyways, getting back to the podcast where I just asked Sahil what his idea of success is. You know, people say कि success का meaning हर एक के लिए अलग अलग होता है, but after reading little bit of material upon this, you can say कि मतलब success is basically when you love to do what you do and the byproduct that you get is also satisfactory. For example, I love my career. Example, I hate it. I love my career. फिर आता है end result, which is let's say money is the byproduct and the money I get is also satisfactory. मेरे expenditures हो जाते हैं, I can save, I can invest, all that stuff. I can do that. Now this gives every one of us a sense of accomplishment and being successful. Anything above that is primarily, not to call people out on this, but out of, you know, being a bit of a narcissist or a deep-rooted insecurity, which, you know, if you want money, then it means kind of ki you need that freedom and power which comes with money. You can do what you want to do, which was my case. You know, it's based on early childhood things. Okay, so, here let me ask you one question कि एक बंदा रहेगा जो अपना ड्रीम जॉब करता रहेगा, ठीक है, but the person is not earning much. Yeah. So can that person be successful? When you say not earning much, what do you mean? I mean the amount of money which society wants him to earn, but like no amount of money he wants to earn. It's upon that. देख society, देख अलग अलग चीजें होती है. जैसे अगर गांव में जाएगा तो महीने का 10-20 हज़ार भी लाएगा, वो बहुत होता है गांव के लोगों के लिए. अपन थाने में रहते हैं,
अपन के लिए अगर महीने का 1-2 लाख भी लाया तो सोसाइटी के स्टैंडर्ड से अपन है उधर, तो सोसाइटी का स्टैंडर्ड बदलता जाता है। तू जब एक डेवलप जगह पे जाता रहता है, गांव से बड़े टाउन एरिया मुंबई का, वहां पे तेरे को भाई करोड़ों में ही कमाना पड़ेगा ना, और वो तो सोसाइटी के लिए भी नहीं, तेरे को उधर जिंदा रहने के लिए। तो वो डिपेंड करता है Okay. बहुत ज्यादा। So basically, if you're happy doing your dream job, then you are successful. Yeah. Okay, what will you call a successful person? What is your idea of success, Ashlesh? My idea of success would be like, जो मैंने क्वेश्चन इसको पूछा था, from my perspective, if the person is happy doing his dream job, and even if it's not earning much, like at least वो इतना कमा रहा है जो जिससे वो अपना फैमिली चला सके, so according to me that would be a successful person, क्योंकि ड्रीम जॉब कर रहा है obviously। और बट उसका wants, मतलब he does want good house and good cars, will he call himself successful? मतलब it depends on his wants as well, no? obviously Is what I'm asking. This is it. That's a want, and other things are needs. ठीक है, you know, most of the parents are pressurized to do more than they should, because you know, like अपन को ये मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, ठीक है। सो आवर पेरेंट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर अस, नॉट फॉर देमसेल्व्स। सो दे वर हैप्पी when we were children, they were happy. When we started to grow up and we started saying कि अरे मुझे Xbox चाहिए, मुझे PS4 चाहिए, ये वो चीज़ें चाहिए, उसके बाद उन पे वो प्रेशर आने लगता है कि अरे मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे ज़्यादा, तो ताकि इसको जो चाहिए वो मैं दे सकूँ, वो सब कर सकूँ, तो उधर जाता है। Okay, so that is, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है कि wants जब आती हैं in terms of money, that's when you work, like that's when you have to work. Okay. ठीक है, पर while working, while catering your wants, are you still successful? Or will you call yourself कि नहीं मुझे और successful होना है जब मेरे wants हो जाएंगे? देख, this thing has to do with a sense of entitlement. So जब देख, जो अपना example था, the want of your kid for PS4, ठीक है, your earnings right now are not enough for affording a PS4. Then you'll be like, do I deserve this kind of feeling of successfulness? Well, मेरे हिसाब से I guess the parent would work hard to मतलब उसके बेटे का wants पूरा करने के लिए, क्योंकि being a parent, you know, I think it has to do with some sort of validation. You know, कि parents would feel validated by themselves when they do something for their children. You know, कि मतलब I am now successful enough that I can take care of someone else as well. So that comes in sense of validation as well for themselves, and when they can't do, they feel कि I can't cater to my child's needs, you know, वो चीज़, and it would in turn make them to work harder. But yeah, but I wouldn't call that being successful as such. वही मेरा क्वेश्चन है कि जब तुम्हारे wants बड़े हैं, it should not matter. Exactly. It should not matter what a child thinks or wants. Success in career is of course different than success in your personal life. यहाँ पे भी सॉर्ट है, वहाँ पे भी सॉर्ट है, तो तुम सक्सेसफुल हो लाइफ में। वो तो पेरेंट्स का हो गया, बट अपना एक टीनेज का भी एक अलग होता है, यू नो, वो सक्सेस वाला चीज। टीनेज के लिए तो हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए तो सक्सेसफुल हो गया। Even though that should not be the case, and it should be what they like and they excel in that. This is a topic we can take in the future podcasts maybe. सोसाइटी ने भी वैलिडेट कर दिया कि अच्छा ये बंदा स्मार्ट है, ठीक है, अच्छा मार्क्स ला बेटा और अच्छा तरक्की करो, तो वैलिडेशन मिल गया, मैं सक्सेसफुल, चाचा भी खुश हो गए, शर्मा जी का बेटा भी। We didn't ask Rishabh, what is your idea behind success? Like मैं अभी क्या तुम लोगों का बात सुनकर क्या सोच रहा था कि घर एंड बच्चों को साइड में रखा, तो लाइक यूजुअली व्हेन यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग, तुम्हारे नीड्स बदल जाते हैं, लाइक जो गाड़ी चाहिए एंड ऑल दैट, जो हमारे नीड्स रहते हैं, आई थिंक दे चेंज व्हेन यू आर हैप्पी इन द सेंस ऑफ with what you're doing. You don't crave for materialistic things as such. You know, like when you're successful now, you get that sense of accomplishment which fulfills you as a person and validates you. ठीक है,
तो मतलब एक तुम्हारा सेल्फ इमेज भी एक अच्छा बन जाता है खुद का. इन द सेंस अपन इनसिक्योर नहीं रहते उतना. इनसिक्योर रहते हैं बिकॉज इनसिक्योरिटी का ट्रिगर ना बहुत ज्यादा एक छोटी चीज पे बेस रहता है. सेंस ऑफ अबैंडनमेंट को ले ले एग्जांपल से, कोई छोड़ के जाता है तो वैसे फट टाइप जाता का नहीं है. बोल रहा है यूजुअली कि वो मेरे पास गाड़ी नहीं है उसके पास गाड़ी है वाला, वैसा वाला. वो वाला इनसिक्योरिटी वो अलग चीज होता है, you know? उस सेंस में बोल रहा हूँ कि फिर वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है. हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता है उसके Yeah. बाद. लाइक क्योंकि वो चीज अपन समझ जाते हैं कि कंडीशंस अलग अलग है. यू नो लाइक बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्थी. बीइंग रिच इज बेसिकली बहुत ज्यादा पैसा होना. बीइंग वेल्थी इज बेसिकली एसेट्स होना जो तुम्हारे पीछे वैल्यू में बढ़ते रहते हैं. तो वो चीज होता है. So, in a way, the definition of success changes from, first of all, yourself, then the society. No, And- I like in success definition of I'm gonna go out on a stretch and say success का definition एक ही होता है कि तुम्हें जो तुम कर रहे हो वो अच्छा लगता है और तुम्हारा जो बाई प्रोडक्ट है जो तुम्हें मिल रहा है वो भी एक सेटिस्फैक्ट्री है. ये चीज डिफाइन करता है कि तुम सक्सेसफुल हो करियर में. ठीक है, आगे पीछे का जो भी है ना, इट इज ऑल बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स बेसिकली. कि तुम्हें कितना पैसा कमाना चाहिए, तुम अगर कौन सी जॉब करते हो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम रिस्पेक्टेबल हो. तुम अगर मेडिकल फील्ड में हो, तुम नर्स हो, तुम्हारी थोड़ी कम इज्जत की जाएगी. डॉक्टर हो तो ज्यादा इज्जत की जाएगी. ये चीज सोशल नॉर्म्स डिसाइड करता है. ठीक है, एक तुम अगर बिग पिक्चर में देखते हो तो वो सक्सेस का डेफिनेशन एक ही है. अगर तुम माइन्यूट करके तुम अगर माइक्रो लेवल पे देखते हो पर्सन टू पर्सन तो वो एक अलग हो जाता है. बट उसका जो शैडो होता है ना तो वो एक ही चीज है. That's it. That's what. So, like in your example, that nurse is happy being a nurse in that point of her life, but society will give her lesser respect in comparison but to the it wouldn't doctor. matter to her. It wouldn't matter to her. Yeah. But thinking about from the society's perspective, वो बोलेंगे कि वो कम सक्सेसफुल है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है. Yeah, but it wouldn't matter because she knows she's successful. Exactly. So And it which- shouldn't matter. She loves doing her job ना, तो I Yeah. guess Like when तू acting वाले चीज में था, did it matter what we people think? नहीं. You were happy. You were in your own. एंड आई थिंक देखो पता है कि तू कुछ भी कर लेगा तो हम लोग लाइक तेरे से जो क्लोज है वो तो हमेशा तेरे से क्लोज ही रहे. मतलब लोग तो सोचेंगे बस क्लोज फ्रेंड्स नहीं कुछ बुरा बोलना चाहिए. दैट इज द मेन. कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का कुछ- काम है कहना. मैं इसको बजा देगा. सॉरी ब्रो. So according to maybe all the four of us, success can also be called as happiness. Yes. Yeah. Just happiness. मतलब Happiness एक is a word part में of Yeah, that would be more logical because then success would consist of many things, like sense of accomplishment, But then self validating source भी होता है तुम्हारे मतलब पास. लाइक खुश तो हम अभी भी है हाँ. वैसा होगा. but like after everything, sense of accomplishment and everything that you said, Yeah. you want all those feelings to be happy. To make you happy, yes. Yes. So in the end, it is all about happiness. Everything is about happiness. ऐसा Like भी कोई कोई ऐसा है? उदास होने के लिए कुछ नहीं करता. वो बोलते हैं भाई लोग It's not true. वो अलग डिस्कशन है. Okay, so I have a good question which came from Sahil. What is the last thing that you did that made you feel successful? Let's start with our guest here, our third best friend here. Again. The Sahil. last thing I did which made me feel really successful was when when I lost weight, basically I would say. When I was in a really good shape, I worked hard on myself. वो वाला scene पे I felt really, ऐसा I have accomplished something and I was really happy with myself. But I wouldn't call that a success because it changed me on a surface level but did not do anything about my insecurities. But what made me feel really successful in general was I gained that weight back again, obviously, but this time the sense of confidence which I have is from inside. Basically, I've developed that sense of confidence. I've not done anything ऐसा मतलब praiseworthy ऐसा कुछ, but accepting myself the way I am, that is something that have brought a sense of being successful to me. Great. मतलब तू
your last successful feeling came from accepting yourself as a person, like your body. Yeah. Great. And let's go to Ashlesh. Okay, for me, the last successful thing would be when I was an introvert kid, and the process from how I changed to introvert to, I guess, an ambivert kid. Like you guys talk about कि यार ये बहुत change आ गया इसमें, बहुत बदलाव आ गया है, लोगों से बात करने लगा है, जोक्स मारने लगा है, and all that thing. मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील होता था कि इनफैक्ट मेरे स्कूल के दोस्त लोग भी बोलते थे मैं एक्टिंग लाइक थिएटर में जा रहा था ना, दे यूज्ड टू टेल मी अरे बहुत इंट्रोवर्ट था तू, थिएटर में कैसे गया है. देन मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि दैट चेंज जो मैंने वो चेंज लाया है खुद में, वो आई कुड कॉल दैट अ सक्सेसफुल फैक्टर. तो थिएटर ने तुम दोनों को हेल्प किया. हाँ, मेरे लिए भी सेम. माय लास्ट सेंस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल came after both the workshops that I did, that we did with me and Ashlesh. Like during the process of those 8 months, I was not feeling that successful wala feeling, but I was still loving it. मतलब अभी जाके पता चलता है कि अभी जाके पता चलता है कि उसका the dots have connected. हाँ, उसका मीनिंग क्या था. एंड मेरा भी सेम है. So I was not always an introverted kid, but my 11th 12th was shit. You and shut yourself off. Been there. Like मैंने खुद shut भी नहीं किया, and I didn't shut myself off the things that happened around me or the feelings that I had in those 2 years made me shut myself unknowingly. And जब मैं उसके बाहर आया after these 8 months of workshop, that made me feel successful. So that is my story. So Rishabh, what is your story? For me, I got this feeling. I was actually sketching a portrait a few weeks back, and ऐसा feeling I mean, I can take this further. मेरा कुछ हो सकता है इस इंडस्ट्री में. I know I can be successful ये करते हुए. तो that made me really happy, and मेरा confidence. I mean, मैं मेरा आर्ट पोस्ट ही नहीं करता usually. अच्छा. But मैं बहुत like किया last time because I was like yes, I like तभी मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा बना है वो. I think I can. हाँ. जब तूने वो एक आर्ट पीस बनाया एंड तुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू दिस ऑल माई लाइफ, मेक मनी आउट ऑफ इट एंड बी हैप्पी. बट राइट नाउ दैट इज योर होप फॉर योर फ्यूचर. लाइक यू होप दैट यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड नाउ यू होप कि ये तेरे फ्यूचर में तू करेगा. सो आफ्टर सक्सेस, आफ्टर हैप्पीनेस कम्स होप. क्यों करोगे तुम? आफ्टर अ पॉइंट खुश हो गए, पैसा है, फैमिली है, सब है, फिर क्यों करोगे कुछ भी? सुबह क्यों उठोगे? You become content. As human beings, we cannot be content. Exactly. Why? Because we have hope that something else will happen. We can basically we want to evolve अंदर से. We want to get stronger, better. So with each day we wake up wanting to do what we want to do on a bit more larger scale. Exactly. ये महीने में मैंने मतलब बेसिकली अगर 5 किलो कम किया तो मेरा प्लान रहेगा कि ओके मैं अगला महीना मैं 6 kgs तक लेके जाऊंगा. तो आई डिड समथिंग आई लाइक एंड आई वांटेड टू अ बिट इंटेंसिफाई इट. लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. मैंने बहुत ज़्यादा अडल्ट्स लोगों को देखा जिन जैसा बिहेव करते कि उनको सब आता है. फिर उनको देख के सैड लगता है कि लेकिन वी नो वो लोग भी रात को सोचते होंगे डिप्रेस होके. लाइक अगर ये लॉजिक से देखे, अगर जो जॉब कर दे बेसिकली दे वोंट हैव दिस फीलिंग ऑफ टेकिंग समथिंग टू द नेक्स्ट लेवल. तो उनका क्या होता होगा? वही दैट इज द रीजन. रैट रेस एक वीडियो देखा रहेगा ऐसे रैट्स का, तो उसमें पिक्चराइज किया है कि कैसा सब रैट रेस में है. सिर्फ खुशी के लिए फिर दारू आता है, किसी को सब आता है, ड्रग्स आता है, एंड नो मैटर व्हाट यू डू यू आर ऑलवेज सैड इफ यू आर स्टक इन दिस रैट रेस. फिर इसलिए वो रैट रेस में होने की वजह से इसलिए तो एडिक्शन आता है ना. यू गेट डिप्रेस्ड एंड देन यू टर्न टुवर्ड्स समथिंग. बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी नाइस काइंड ऑफ discussion on first off what is success, what is success, and then what I think we did go into the psychology behind success. We even went into the psychological aspect behind success or definition of success. Deep हो गया काफी deep. That's enough for today, and thank you so much for coming on the podcast, Sahil. Pleasure is mine. Thank you very much. Best friend. Third best friend. On the risk of sounding a bit grandiose,
Can I break the fourth wall with the audience? Yeah, sure, if you want. I hope you guys noticed what we talked about, and all our stories of being successful was not related to career or anything. Yeah. It was about accepting ourselves. Yeah. So give it a thought, and think back on your own life and see what you can do to make it a more better livable one. Yeah. ऑडियंस को ज्ञान मत दो प्लीज. फिर भी ठीक है. चलो क्या बात बोला. वाह. ये मेरे को बुली कर रहा है. So anyways, thank you so much, Sahil, for coming on the podcast. Thank you so much for listening if you made it till the end of the episode. And please like and share the podcast. Comment about what you think about what Sahil said. Yeah. Yes. And if Ashlesh was right, and if he isn't right, I'll be taking his position. He won't be the best friend anymore. Personal I attack. mean, like थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखो. ज्ञान नहीं दे रहा है वो, जस्ट अपना पर्सपेक्टिव. Perspective. Yeah, but even comment your last successful feeling, your something that happened in your life that you did that made you successful just recently or what. Feel successful. Yeah. Yeah, feel successful. Yes. So yeah. Thank you guys. Thank you so much for listening. We'll see you in the next one. Bye bye. Peace. I think देखो पता है कि तू कुछ भी कर लेगा तो हम लोग लाइक तेरे से जो क्लोज है वो तो हमेशा तेरे से क्लोज ही रहे. मतलब लोग तो सोचेंगे बस क्लोज फ्रेंड्स नहीं कुछ बुरा बोलना चाहिए. दैट इज द मेन. कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है. मैं इसको बजा देगा. Sorry bro. So according to maybe all the four of us, success can also be called as happiness. Yes. Yeah. Just happiness. मतलब Happiness एक is a word part में of. Yeah, that would be more logical because then success would consist of many things, like sense of accomplishment, But then self validating source भी होता तुम्हारे मतलब पास. लाइक खुश तो हम अभी भी है हाँ. वैसा होगा. but like after everything sense of accomplishment
and everything that you said. Yeah. You want all those feelings to be happy. To make you happy, yes. Yes. So in the end, it is all about happiness.